बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स बात किए हैं। उन सब के हर एक विषय के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने से पहले थोड़ा बजट के विषय पहले सामने रखना चाह रही हूँ। सर, मैडम, this budget is a budget which is prepared as the first budget in the second quarter of the 21st century. इसीलिए ये बजट 2026 से लेकर के 2050 तक का बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ता है। Then we are also starting the new five-year cycle of the next Finance Commission, the 16th Finance Commission, which starts from 1st April 2026. And therefore, the estimates are largely on the recommendations of the Finance Commission. So I'm taking care of the next 5 years as per the recommendations. Then coming to 26-27, you're looking at 1 year's budget. So in other words, this is, as Honorable Prime Minister said before the commencement of this budget session, that this is the first budget of the second quarter of 21st century, and truly it has got many of those features in it. That is why you're looking at some of the long-term investments that we are making today, which will have bearing in the long term. Whether you're talking of the biopharma Shakti, the very thing that where we are highlighting how biosimilars will be an answer to many of those life-threatening diseases. And that takes a long time to evolve. You invest today, biosimilar arrives after several years. But India should have a lead in that, and therefore even in this budget we've provided for research in biopharma and making sure that we will be leaders in biologics and biosimilars. The same is the spirit which guided us when we said we need to have India's Semiconductor Mission 2.0, the second edition of it. And in that, I'd like to highlight that I've spent a brief mention of investing in cutting-edge areas like carbon capture, because carbon capture is a very important means through which our 2070 net zero goal can be achieved. We have mentioned about carbon capture also. The strategy, the technology, and the ways to do it are all evolving, but even as it is evolving, we have invested in it so that we can be a leader in that. By doing these, which are somewhat leading us towards a medium and a long term, we are also continuing our push in building infrastructure. Now, it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down, and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost. So we very clearly created freight corridors as part of the very exclusive land on the surface transport, but equally spending resources and planning for infrastructure through waterways, national waterways. Even as we are doing this, Madam Deputy Speaker, emphasis on labor-intensive sectors and giving them emphasis so that not just they can have more resources to improve, but even looking at legacy industries which are waiting for rejuvenation have been funded. I'll take the example of building champions out of MSMEs, particularly the medium-sized units, which do not want to grow out of the MSME category, even though they have the capacity, even though they have every strength. But even in the last budget, we expanded the definition of MSME so that even if they go beyond a certain level in their turnover, they'll still be defined as MSME. They don't lose out on their benefits. But this budget, we've taken that a bit further and
very clearly announced ways in which such medium-sized industries which have potential to grow and export and also become champions in their sectors can be given further help, and have announced several steps towards equity help, professional help, and also making sure that they will have liquidity access. And in the process of 3 ways in which we want to reach them, we are giving them the support which, even if they grow out of the turnover limit, which defines them as an MSME, they will be leaders in their sectors so that they can participate in India's growth. Is this only for industries? And is it not going to concentrate, is this budget not going to concentrate on building manpower so that our youth can aspire in a particular sphere of activity to go with skills in his hand or her hand and achieve jobs or become entrepreneurs themselves? In this, I would like to highlight 2 major announcements that we've made, in which I have not named any states. In fact, I have openly said, for creating this big facility, states can aspire, any state can aspire, going through the PM Gati Shakti filters. If you think you have a proposition in your hand, any state can ask for one of the 5 that I've announced in terms of the allied and health service, where we want to set up medical hubs. States can aspire to be a part of it, wherein all the aspects of medical education and hospitals for treatment of patients can all be focused in one area, where nurses or any other 10 different allied health services will have their institutions through which people can learn, get themselves skilled, find jobs there itself, and that will become a medical tourism hub. So any state can qualify, and I'm sure states which have traditional strength can also be coming in for it, and this includes Ayush as well. So this is a major forward-looking proposition, wherein immediately, because of the medical tourism advantage that India has, this will become a center of multi-purpose, multi-speciality allied health service center through which we can promote medical health, medical tourism. So that was one of the major announcements. Similarly, we have said, instead of waiting to qualify and finishing your education and coming out and seeking where should they go for acquiring skills, the skilling element can be brought into education itself, and at the end of the day, when they come out, students can say, I can become entrepreneur, and this kind of a mega center can be kept next to any industrial cluster that any state has. So these mega entrepreneurship building centers as education hubs can also be coming up from any state. We are willing to work with the states so that this mammoth higher education center can be propped up, and therefore students can go there, come out as entrepreneurs, get to doing businesses. So if we've done these 2 in the major education-related activity, health-related activity, we've also openly said that mega textile parks, we are willing to work with states, particularly looking at industrial textiles, looking at textiles which are going to be new age, which are now becoming a part of manufacturing in industries, whether they manufacture a car, where the safety cushion which comes in is all completely made out of industrial textiles. So these kind of new age textile requirements can also be produced. So these are major announcements, and I welcome any state which wants to come into this area. The center is willing to work with them and promote it. If this is all being done at the level of youth and students and larger centers where jobs and education can go together, health and education can go together, health and providing services to patients who come from different parts of the world come together. We are also placing emphasis in animal husbandry, fisheries, to make sure that in every district you get the facilities for a veterinary surgeon,
veterinary hospital, testing labs, so that animal husbandry can be given that priority immediately in the rural areas. So farmers or those who are not farmers who want to get into animal husbandry can also benefit. That is why these announcements for fishing sector, it goes along with money being put in for restoring 500 Amrit Sarovars, the waterways, and the particular waterway which has been, national waterway which has been announced, also has institutions of excellence along its course, along the course of the river, so that shipbuilding, boat building, particularly I mentioned this, the route in which the national waterway is being announced, which will end up covering all the mineral-rich parts of the country and linking up with Paradip or with Dhamra port, is passing through states where the Nishad log can become boat makers, and they're already experts in it. They can also teach people. They can become part of the Institute of Excellence, so that inland shipbuilding for the transporting of huge logistical facilities will all have the support of the local experts who for generations have done this work. They can also benefit in this growth. Equally, ma'am, as I said, not just helping the MSMEs which are new, but also the old and legacy industries, 200 legacy clusters which have been known for decades as those places which supported MSME, and from there they produce and export. It can be any of them. It can be Ludhiana, it can be Jalandhar, or it can be Kanpur, or it can be centers near Bihar, it can be anywhere in Bengal. So any legacy cluster, 200, we have volunteered that it can be funded, upgraded, given the modern instruments, hardware, software that is required. We will be undertaking that. Other than also providing for girls' hostel in every district, so that girls do not hesitate to take up to science education, which requires long-term, long hours to be spent in the colleges and universities. All of them, not just the girls' hostel, but the training, the internship, and the kind of programs that we're looking at education centers are all with AI provisioning. So AI education is not anymore kept at elite levels. It's going to be available for all our young. So if I very quickly move to mention the numbers, madam. Gross tax receipts are at 44.04 lakh crore in this BE. It's about 8% more than what was in BE of RE of 25-26. 3.26 lakh crores more than the RE. And if I were to look at the total expenditure, madam, for 26-27, it's at 53.47 lakh crores, so much more than what we receive as tax receipts. The capital expenditure is at 12.22 lakh crores, which is 3.1% of GDP, and also 11.5% higher than the RE 25-26. Of this, I'm glad to say, on the recommendation of finance ministers from the states who met me before the budget preparation, which is a normal calendar event which before every budget I meet up with the state finance ministers, on their recommendation and accepting their recommendation, capital expenditure grant that we grant, call it loan without interest for 50 years, which eventually would be equivalent to a grant, has been increased on their request to 2 lakh crores under SASKI, and that is very much for their capital expenditure. Many states have actually shown that some of the signature projects of their states have been completed over the years since 2021, when we have been giving them SASKI, 50 years interest-free capital expenditure, money which goes to the states. So with this, the effective capital expenditure, although I said capital expenditure is 12.2 lakh crores, the effective capital expenditure, which includes grants that I give to the states as well, is
17.1 lakh crores, which is 4.4% of the GDP, which goes only to build India in the states and everywhere else, union territories and so on. So states and union territory put together for the capital expenditure, 17.1 lakh crore is being given effectively. I'm not spending too much time on the fiscal summary, madam. Fiscal deficit, as you know, for this coming year has been pegged at 4.3%. There are, of course, quite a few honourable members who said it's by restricting your expenditure that you've come to that fiscal consolidation. I'll explain it, that it is not by restricting the expenditure, but I can expand on that a bit later. The resources transferred to the states. Often we are accused of not really transferring the 41% which the Finance Commission has recommended, that Government of India should give 41% of devolvable tax to the states. It's not 41%. I will assure this House through you, madam, 41% it is that we have transferred to the states. We have not reduced any states transferred devolvable tax which has to go. And that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल, 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में, और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है. और इसके साथ साथ मैडम क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसा है इंडस्ट्रीज काम करने के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों के लिए टोटल क्रेडिट has actually expanded by 13.8% in the current financial year. As of January 15, 2026, non-food bank credit has grown by 13%, and the non-bank credit, which is NBFC, has grown by 15.4% at the same period. So credit का कोई कमी नहीं है. I want to highlight the fact, madam, the 16th Finance Commission, whose report I had tabled in this House, has very clearly said, क्योंकि बार-बार ये प्रश्न आता है कि सेंटर स्टेट्स को देने वाले पैसा नहीं दे रही है, उसका विषय में फिनांस कमीशन अध्ययन करने के बाद उनका बयान है रिपोर्ट में. मैं I'm not exactly quoting it, I'm putting that report में क्या कहा गया. 16th Finance Commission analyzed the states' share transferred by the center to the states from 2018-19 to 22-23 and concluded that in each of these years the devolution made by the center exactly matches the recommendation of the Finance Commission. So सिर्फ हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, फिनांस कमीशन ही विस्तार से इसको अध्ययन करने के बाद उनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाना है, ये उदाहरण लेकर के 18-19 to 2022-23 इन सालों का 18 to 2022-23 इन सालों का विषय में अध्ययन करने के बाद स्पष्टता से बोला है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जितने भी पैसा जाना है वो टिक गया है स्टेट्स को. कोई इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है. क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूं, थोड़ा
सबको मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है, ये निर्णय करने वाले सीएजी है। नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड। उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है, उसका अध्ययन होना चाहिए, ना कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस भी है, सरचार्ज भी है। सो जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है सेस कलेक्ट कर सकते हैं और सरचार्ज कलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो हटाने के बाद जो पूल रहता है उसके ऊपर आपको 41% मिलना चाहिए। वो मिल रही है कि नहीं मिल रहे, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो, ना कि जीटीआर के ऊपर, और उसके बाद बोलोगे कि सेस भी आप कलेक्ट कर रही हो और उससे हमें कम भी दे रही हो। नो, यू कैन हैव इट बोथ वेज। So I think we should be very clear। और ये Annex 4A और Annex 4B, sorry, माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री जी, कंटिन्यू। There is less accountability. The CAG also has said that. So the concerns that the state raised is that if you take everything in cess, then what are the states left with? Like even the new schemes, if you keep cutting, then what will the states have? That's the limited point I think the opposition is raising. I don't think there's any allegation about it. It's just to what. There's no suffering to the states even on that score, Madam Honorable Member. I'd like to explain that as well, and I will go into the detail with that as well. Cesses and surcharges, cesses particularly are collected for a particular purpose. Health cess, education cess, road cess, इन सब में जितने भी कलेक्ट होते हैं वो हमारे काम में नहीं आता है, वो स्टेट्स को जाता है उस पर्पस के लिए। स्कूल बनाओ, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेंटर में कुछ कमी है, मशीन्स खरीद लो, उसके लिए जाता है हेल्थ सेस। रोड सेस, रोड बनाने में जाता है, और जितना कलेक्शन हुआ उससे ज्यादा ही हम स्टेट्स को दे रहे, वो नंबर के साथ मैं अभी बताऊं। इसलिए सेंटर कलेक्ट करता है, ये नहीं है कि वो सेंटर ही उपयोग करता है। आखिर सेंटर के पास कोई रोड नहीं है और सेंटर के पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ऐसे भी नहीं है। हॉस्पिटल हर जगह पर है, और हर जगह पर जितने भी हॉस्पिटल है स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। सो सेस कलेक्ट करने के बावजूद पैसा जाता है स्टेट्स को ही। सो ये आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट, एंड वो नंबर भी मैं देती हूँ। और रिसीट बजट में, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर्स इस विषय में बहुत रुचि लेते हैं, ये बोलना चाहती हूँ। रिसीट बजट एक डॉक्यूमेंट है, बजट के समय बजट डॉक्यूमेंट के साथ वो भी आता है। उसमें अनेक्स 4A और 4B देख लीजिए, उसमें सीएजी ऑडिटेड नंबर का बयान उसमें रहता है, आप देख सकते हैं। हम हमारे बजट को रिफॉर्म करने के रास्ते पे चलते एक नया रिसीट बजट में जोड़ा है, 4C। वो 4C भी हर साल आता है। उस 4C से आपको और क्लियरली डेटा मिलेगा कि कहां जा रहा है पैसा।
ये भी फिनांस कमीशन अभी रेकमेंड भी कर रहे हैं कि हर साल आप डेटा निकालो उसका, वो निकाल रहे और हमारे बजट के डॉक्यूमेंट में रिसीट में वो भी है। सिर्फ मेंबर्स का जानकारी के लिए मैं देना चाहती हूँ। और इसमें से मैं शुरू कर रही हूँ ऑनरेबल मेंबर्स का क्वेश्चंस। ऑनरेबल एनके प्रेमचंद्रन जी हैड आस्क्ड रिलेटेड टू दिस। आप अभी टारगेट डेट टू जीडीपी में जा रही हो विदाउट अमेंडिंग द एफआरबीएम, ये प्रश्न था उनका। मैं उनको कहना चाह रही हूँ डेट टू जीडीपी रेशियो ये नया टारगेट कुछ नहीं। अलॉन्ग विद फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी ऑलरेडी इंक्लूडेड है एज अ टारगेट। 2018 अमेंडमेंट ऑफ द एफआरबीएम एक्ट में वो बनाया गया है वो प्रावधान। दिस इज मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 41B ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। इसके कारण हम ये स्पष्टता से कह सकते हैं गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी to achieve Viksit Bharat is to provide capital investment in the economy. For that purpose, we have allocated effectively 17.15 lakh crore, and this will work as a force multiplier and therefore accelerate our move towards Viksit Bharat, and this will be a very important factor in achieving Viksit Bharat, not by moving this or that. We have not moved, both are available through the FRBM Act. मैडम, बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नहीं ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे। मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। एल्डरली केयर के लिए हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स, जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा। इसके अलावा लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी प्रोफेशनल्स टू बी अवेलेबल एज वेटनरी प्रोफेशनल्स, गांवों में वेटनरी प्रोफेशनल के रोल में काम करने के लिए 20,000 से ज्यादा लोगों को इसमें तुरंत इस साल ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, उनको जॉब्स मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि हमने आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जोड़ने वाले एक स्कीम, जॉब से भी जोड़ने वाली एक स्कीम है। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल। 20 आइकॉनिक सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी सीधा भी पर्सन टू पर्सन भी होगा। इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं। श्री मार्ट्स ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। एसएचजी ग्रुप्स के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे प्रोत्साहन मिलता है, उनको कॉर्पस मिलता है, उनके छोटे छोटे बिजनेसेस कराने के लिए मदद मिलता है। बैंक्स भी उनको उनके कॉर्पस को मन में रखते हुए उनको लोन्स भी एक्सटेंड करते हैं विद सम कंसिडरेशन इन द रेट्स। इसी एसएचजी ग्रुप को फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसमें इतने सारे गांवों में
आज हम जाने में, आई एम श्योर ऑनरेबल मेंबर्स जाने के समय अब मिल सकते हैं कितने लखपति दीदी हर गांव में अभी सामने आ रहे हैं। उनका नंबर हम बढ़ाने के लिए भी अनाउंसमेंट की है। और ये महिला आज सिर्फ उनके अपने ग्रुप में ना करते हुए, मैडम मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ, मैं नागालैंड गई थी, उधर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा थोड़ा कम ट्रेनिंग पाए हुए महिला आज सामने होकर के बोल रहे हैं हम मेरा अपना दुकान चलाना चाह रही हूँ। वो कपड़े में हो सकता है, लोकल अचार हो सकता है, या लोकल कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है। इन महिलाओं को आज उनके अपने एंटरप्राइज खोलने का इतना आतुर है, उनको हम ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको बैंक के द्वारा असिस्टेंस भी देंगे। सो शी मार्ट का मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकले हुए महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको सपोर्ट देना, मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करना। इस शी मार्ट का अनाउंसमेंट, ये ट्रांसिशन जो होता है क्रेडिट लेड लाइवलीहुड, उससे बाहर आकर के आज उनके अपने चलाने वाले एंटरप्रेन्योर तैयार करना, वो भी महिला के बीच में, इज अ मेजर अनाउंसमेंट। फिर दिव्यांगजन कौशल योजना, कस्टमाइज ट्रेनिंग देंगे जिनको कैसे किस रूट पे जाना है, विद सेंसिटिविटी एंड डिग्निटी इंटैक्ट फॉर दिव्यांगजन। उनको आईटी में सेक्टर पा सकते हैं, या तो एबीजीसी में सेक्टर, जिसको अभी बड़ा प्रोत्साहन मिला, वो वेव्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रही है। इनमें ये दिव्यांगजन लोगों को आईटी सेक्टर में भी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, एबीजीसी में भी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी उनको जॉब्स मिलेगा। ऐसे हर एक सेक्टर के ऊपर ध्यान रख के हम जॉब्स के लिए, युवाओं के लिए ट्रेनिंग, इन सब में एआई का एक्सपोजर भी उनको दिलवा रहे हैं। मैडम, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए गए, उनको भी मैं कहना चाह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन एडवाइजरी, वो भारत विस्तार के द्वारा ये मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। एग्री स्टैक जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट गए, हर फार्मर को आइडेंटिफाई करके उनके क्रॉप है, उनके सॉइल हेल्थ कैसा है, उनको कितना फर्टिलाइजर आवश्यकता होगा, ये सब का विषय कंप्लीटली डिजिटाइज्ड रूप में एग्री स्टैक में रखे हैं। इनफैक्ट एग्री स्टैक हमारे यूपीआई स्टैक जैसे बड़ा नेक्स्ट भारत का एक इनोवेटिव अप्रोच टू डिजिटाइज एग्रीकल्चर, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए ये एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर का एक पैकेज भी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। कौन सा बीज अच्छा क्वालिटी है उसको टेस्ट करने का, और क्या एक्सटेंशन ट्रेनिंग दिलवाना है, इरिगेशन कितना कैसे होना, ये दोनों का एग्री स्टैक जो डिपार्टमेंट का है और आईसीएआर पैकेज जो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सीड एंड कल्टीवेशन, इन जो दोनों को मिल करके बेटर फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए जो साइंटिफिक बेसिस में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है, उसको पूरा समर्थन हमने स्पष्टता से कही है। इससे फार्मर को रिस्क कम और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। हमारे भारत के किसान को हम धन्यवाद कहना चाहिए कि इतनी सारे रिस्क जो है, बारिश आएगा, ओला होगा, या क्रॉप एकदम नष्ट में आ जाएगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वालिटी ऑफ सीड, इन सभी विषयों में उनका इतने सारे रिस्क है, फिर भी हमारे अन्नदाता सामने होकर के हमारे एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी दे रहे हैं। उनका अभी डिजिटली सपोर्ट करने के लिए ये महत्व प्रयत्न है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हमने पूरे साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने का आवश्यकता भी है, इसी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्लांटेशन रिलेटेड मैटर्स में चलते हमने अनाउंस किया कोकोनट प्रमोशन स्कीम।
इसके द्वारा ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सैपलिंग्स को उपयोग कर सकते हैं। 1 करोड़ फार्मर्स के लिए ये तुरंत बेनिफिट देगा। ये एक अनाउंसमेंट कोकोनट प्रमोशन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I would have really appreciated if members of honorable members from particularly from Kerala who spoke about केरला को कुछ नहीं मिल रहा। कोकोनट केरला का जीवन धारा है मैडम, हाँ, और हमारे सरकार के द्वारा प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, देश भर में इन्फ्लेशन रेट 1 है। टोटली इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने में एक नंबर आएगा नेशनल एवरेज। हर एक स्टेट में भी आजकल डेटा निकल रही है। मॉस्पी का डेटा अभी नया सीरीज जो आ रही है फरवरी 27 से, उसमें भी स्टेट्स का इन्फ्लेशन डेटा देते हैं। आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई की वजह से नारियल भी चाहिए खाने पकाने में, और नारियल तेल भी चाहिए। केरला के इन्फ्लेशन नंबर सिर्फ कोकोनट के किल्लत के कारण उनके इन्फ्लेशन में असर पड़ता है। भारत सरकार अभी केरल के और कोकोनट ग्रोइंग हर स्टेट में ये प्रमोशन स्कीम के द्वारा कोकोनट सप्लाई भी अच्छा रहे, कोकोनट ऑयल भी हमारे देश में खूब प्रोड्यूस हो, जिसमें स्टेट्स जो ज्यादातर कोकोनट को उपयोग करते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। सो फार्मर 1 करोड़ बेनिफिट करेंगे, तो कंज्यूमर भी अच्छा कोकोनट मार्केट में आने में ये सुविधा मिलेगा। और आई एम ग्लैड केरल को केरला कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा। फिर कोकोनट ग्रोइंग बाकी स्टेट्स का भी इससे असर। दूसरा, एनके प्रेमचंद्रन जी हर साल मिलते थे मेरे से कि हमारे कैशू ग्रोवर्स के लिए कुछ करो। बाकी ऑनरेबल मेंबर्स भी मिलते थे, कुछ करो हमारे कैशू। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के कैशू सेल्फ सफिशिएंसी हो भारत देश में, कैशू एक्सपोर्ट हो भारत देश से, कैशू का वैल्यू एडिशन हो जाओ भारत देश में ही। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैशू के लिए टोटल पैकेज, और उसका ज्यादातर आई वुड थिंक 70% बेनिफिशियरी आर इन केरला, ऑल राइट, ऑल्सो इन आंध्र प्रदेश। आर ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम काकीनाडा spoke about it this morning. So Maharashtra, Goa, completely cashew industry last few years had their own difficulties. मगर इस स्कीम के द्वारा हमने कैशू को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। सो इन स्टेट्स में थोड़ा एक्टिवली होकर के सामने आकर इसका पूरे भरपूर उपयोग करना चाहिए इस स्कीम को। ऐसे ही कोको, आज को कर्नाटका में भी बीच में इंटर क्रॉपिंग का फैसिलिटी, वो अरेका नट ट्रीज के बीच में कोको कल्टीवेशन हो रही है भारत देश में, उसका भी सपोर्ट हम दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे हिमालयन हिली स्टेट्स में पाइन नट का, वॉलनट्स का, आमंड्स का प्रोत्साहन इस स्कीम के द्वारा मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली त्रिपुरा एंड असम, ये अगर वुड उधर होता है उसको लाइक साम्रानी, द फ्रैंकिनसेंस, दे यूज इट फॉर मेकिंग अगरबत्तीस, एंड साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत बड़ा मार्केट रहता है। त्रिपुरा में मुझे मालूम है बहुत बड़ा वन, अगर के वन हमारे बीजेपी सरकार आने के तुरंत बाद उधर बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ करता था, वो भी इसमें से बेनिफिट होगा। लास्टली, केरला और कर्नाटका, सैंडलवुड का बेनिफिट अब तक कोई सरकार ने उसके ऊपर बात नहीं किया। मोदी जी ने उसमें डायरेक्ट मुझे आदेश दिया